Good morning everyone. Heartfelt wishes of DUSSEHRA to you all. DUSSEHRA, also known as Vijayadashmi, marks the triumph of Lord Rama over the demon king Ravan. Rather, say the victory of good over evil. Now, here we be with a small virtual program on this festive occasion. Prayers, the silent intimate talk between human beings and Heavenly Father. A prayer is an expansion of total faith in the power present within and around us. When we pray with faith, we express it through our sincere and thanks to our Almighty. To mark the beginning of this festivity, let us start with a prayer song. ॐ भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ शान्ति 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 ॐ. We speak, we hear, we listen, we say. Likewise, here we have Parvesh from 8C to share the thought. Today's thought is, when good stays strong, evil cannot win. Not matter how much time it takes, but in end, truth and goodness always win. DUSSEHRA is a symbol of victory of good over evil. I repeat my thought, when good stays strong, evil cannot win. Not matter how much time it takes, but in end, truth and goodness always win. DUSSEHRA is the symbol of victory of good over evil. अर्थात जब अच्छाई दृढ़ रहे तो बुराई कभी नहीं जीत सकती, भले ही कितना ही समय लगे, पर आखिर में जीत अच्छाई और सच्चाई की ही होती है. बुराई पर अच्छाई की जीत की प्रतीक है दशहरा. थैंक यू. Thank you, Parvesh. Words and ideas can change the world. Words heals, words inspire, words motivate. So I would like to invite Shreya from 8th A for the speech. दशहरा का तात्पर्य सदा सत्य की जीत, गढ़ टूटेगा झूठ का, करे सत्य से प्रीत. भारतीय त्योहारों की सबसे अच्छी बात यह है कि उनमें से अधिकांश अपने साथ नैतिक शिक्षा लेकर आते हैं. अश्विन महीने के शारदीय नवरात्रि 10वें दिन विजयदशमी के नाम से मनाया जाता है. विजय का अर्थ है जीत और दशमी का अर्थ है 10वां. दशहरा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान राम ने राक्षस राजा रावण को पराजित किया और जीत हासिल की थी. 9 दिनों तक भीषण युद्ध